it on the table and you spin it around like this. And now when you pick it up, you're going to see there's a little line. Hey you guys, welcome back to Myshadowbeats. Welcome back to another vlog from Scotland. Okay, so this is the morning view. अभी 8:35 हो चुके हैं, but still it's dark. Oh, फिसल भी रही हो. कल रात को स्नो हुई थी. All snow, 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 snow. और ये है हमारा काउ शेड बुटीक बंक हाउस. हमारा ब्रेकफास्ट तो था कपकेक्स, इसमें मैगी नूडल्स हैं, देन ये जीरा बिस्किट्स, कॉफ़ी. तो आप यहाँ पे बना सकते हो कुछ भी. लोग यहाँ पे अंडे लेकर के आए हैं, बॉइल्ड एग, स्क्रैम्बल्ड एग. ये बेडशीट्स बाहर रखने हैं. ओके, सारे बेडशीट्स ओपन करने वापस जैसे थे वैसे ही. ओह, इट्स स्नोइंग आउटसाइड. सो दिस वॉज आवर मॉर्निंग. हमने कल रात को भी मैगी खाई थी, मतलब कप्पा नूडल्स. अभी भी खाया कप्पा नूडल्स. एंड नाउ वी आर रेडी टू लीव. और ये देखो आप 9:45 बज रहे हैं, बट स्टिल द weather is like so cloudy and of course it has started snowing. If you can see मेरे कोच में snow is already here. But look at this view guys, this is so pretty ना. मतलब पहले जब हमने लिया था तो we were like very skeptical कि मतलब कहाँ रहे नहीं रहे. The one reason we took this hostel, that cow shed bunk stay, because हमको एक तो आयल में कुछ मिल नहीं रहा था. जो मिल रहा था दूसरा that was like super expensive, not worth paying. but यहाँ पे आके we were like very happy क्योंकि the view is amazing and ये जो hostel है वो भी बहुत साफ था. इट वॉज वेरी क्लीन एंड दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द हॉस्टल, सो आई रियली लाइक इट. हाँ, बट अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप अपना खाना अच्छे से लेके आओ. कुक अगर करने का मन है, खाना बनाने का मन है तो करो, बनाओ, यू विल एंजॉय इट. हमको बनाना नहीं था तो वी डिडंट टेक फूड. फाइनली वी आर गोइंग. लेट्स गो. वाली हैं अपने इधर ही रहते हैं. Fairyglen is very famous. हाँ, हम जा रहे हैं फेरी समथिंग. चलो, वो घर कितने सुंदर लग रहे हैं वहाँ पे. So we are walking to fairyglen व्यू पॉइंट. लेट्स सी कैसा व्यू आता है. अभी तो खैर बहुत स्नो हो रहा है, तो एवरीथिंग इज़ कवर्ड स्नो. एंड दो लोग हमको मिले, उन्होंने कहा कि इट्स फ्रीजिंग देयर. वी आर ऑलरेडी फ्रीजिंग हियर. अब ऊपर और कितना फ्रीज करेंगे अब भगवान जाने. एंड स्नो तो हो ही रही है. यहाँ पे जो वाटर है ये जम गई है. द लेक इज फ्रोजन. Oh man, ये तो हमारे पानी. Yeah, it is also frozen. मैं तो पहली बार ऐसे तुम आई हूँ किसी स्नो वाले जगह पे. हिंदी क्लास हो रहा है. इसने थोड़ा सा गृह संकल्प लिया कि मैं नहीं जमूंगा. पुराना लेक जम गया था, जबकि ठंड यहाँ ज़्यादा है. ये लेक नहीं जमा है. लगता है अंदर कुछ हॉट वाटर बॉडी है या फिर. हाँ, तो नाउ उल्टा चलने वाले लोग सीधा चले. हवा आ रही है. So you are not looking at the road where you are walking, right? आगे पूरा जमा हुआ है, जाओगे. अभी इन्होंने बोला अगर मैं गिर गई तो यही सो जाऊँगा. Oh wow, क्या फोटो आ रही है यार यहाँ. This is picturesque. I think this is what GoPros are made to capture, not the normal streets. How Shiny walks uphill. So brown or orangish and white is the color. ऊपर ये बकरियाँ अभी भी मस्ती करते हुए. हेलो बकरी. हाँ बकरी. क्या कर दिया? ये मेरा टॉलरेंस लेवल दिखा रहा है. फिनलैंड एंड आइसलैंड.
Yes. I'm ready. बस एक इंडिया का झंडा होता यहाँ लगा देता मैं और डिक्लेयर कर देता माई लॉर्डशिप ऑफ दिस माउंटेन्स. आई नीड अ फ्लैग टू डिक्लेयर माई लॉर्डशिप. काफ़ी ऊपर है. That's where the spot is, you see? वो देखो घेरा हुआ उधर है वहाँ. Can you see? नीचे सिर्फ सड़कें हैं, कुछ नहीं है. The weather is not good. Turn back. देख शाइनी वहाँ है, वहाँ पीछे वो देख रहे घेरा हुआ. ऊपर देखो, ऊपर लेफ्ट ऊपर. इट वॉज सो फ्रीजिंग कोल्ड ऊपर में कि हमारे हाथ फ्रीज हो गए थे. हम गोप्रो फोटो अपने कुछ नहीं ली. 1-2 शॉट्स है फ़ोन के, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ. सो या मतलब अभी हमको इतना कुछ देखने को नहीं मिला. बेसिकली फेरीग्लेन इज़ वन प्लेस जहाँ बोलते हैं कि स्पिरिचुअल चीज़ें होती है, लाइक समथिंग रिलेटेड टू जादू, मैजिशियंस एंड ऑल दैट खुद ही होती है. बट हमको वो देखने को नहीं मिली क्योंकि समर्स में जो स्टोन्स है वो दिखते हैं सर्कुलर मोशन में. You know one thing that we are missing, Sarah? Yeah. My bad collection of songs. लगा दो. Do you think we are missing that? है ना? इसी की कमी लग रही है मुझे पूरे. फ्रॉम फेरीग्लेन वी केम टू पॉटरी एंड वहाँ पे आइल ऑफ पॉटरी है, आइल से कुछ तो था वहाँ पे. हमने जैसे लास्ट ब्लॉग में जिसमें लंच किया था सेम हमने उसी जगह पे लंच किया. आलू है उसके नीचे बड़ा. छोटे रास्ते में. Are you girls excited? She is very excited. Yes, is Shantanu excited? Very excited. तो हम अराइव हैं Talisker डिस्टिलरी में. सामने डिस्टिलरी है, धुआं निकल रहा है डिस्टिलरी से. और अब हम अपना सीट बेल्ट निकालने वाले हैं क्योंकि हमें दौड़ी करना है. You have the package, right? Yeah, I do. In the world, which is still going to talk about that one. 2023, that's our most recent thing. There's a big presentation right the corner. We signed up. Started at 1825. And you've seen that in the day coming here. शांतनु अब आप ये ले लेना, मुझे दे देना फोन. We refer to each whiskey as having its own unique distillery fingerprint, okay? So just like every human fingerprint is unique, every distillery makes their own unique whiskey. 50% of that fingerprint comes from the distillation process, which is this process that is mapped out here on the wall. The second 50% comes from the maturation process, and that is where we take the make spirit that we have made at the end of the distillation process and we mature it in barrels for years and years. Okay? So, the 3 ingredients. Firstly, the water. The water, as I mentioned earlier, comes from underground springs that are situated behind the distillery. I think there's about 14 springs. The barley, and this is barley here, if you've not seen it before, it's a grain. Our barley is not grown in Skye. Our barley is grown on the east coast of Scotland in a very famous place near Aberdeen called the Black Isle. Have you heard of the Black Isle before? It's this sort of famous agricultural land where they make this high quality barley that we all want to use. So, Skye's not very good for growing things, by the way. So our barley, which is grown in the Black Isle, is then taken to a place called Glen. Glen is halfway between Inverness and Skye, and what we do there is 3 things. We steep the barley, we germinate the barley, and then we dry the barley, okay? This used to happen here
and the distillery doesn't happen here anymore. I think they stopped in 1972. Okay, so what you do is you get your barley, you steep it in water for about 2 days. After 2 days, these little shoots start to grow, and this is called malting. Okay, so once we've got the little shoots, you've made malt. That's where you get malt barley, malt whiskey. But once it starts, the sprouts appear, and you need to stop it growing. Okay, so you need to dry it out. So we put it in these big ovens that we call kilns. This is where we make our very first important decision, because what we do is to the fire that we're using to dry out the barley, we add peat. Peat, if you don't know, is an organic, decomposing organic material. Okay, so what you do is you find this up in the hills, and it's like a wet soil. You dig it up, and then you leave it out, and it dries out. It takes a long time to dry out in the sky, but when it does dry out, it gets hard like this. It's very light, doesn't smell of anything at all. But when you burn this stuff, it gives off this very strong, powerful smoke. The barley absorbs the smoke, resulting in peated barley. And if you want to pick this up and have a smell, oh, sorry, that should be that way around. Hang on. Wait. Oh no. Oh yes. There you go. Oh Big yes. one. The big one. That is peated barley. So you get that strong, like bonfires. So if anyone... The peat is from the Isles. Sorry? The peat is from the Isles. The peat is from... I don't know. I think it comes from this Glen area. It's from the same, not from here. It's not हमें तालिस्कर के distillery tour book की थी, and that's what we are here. He's explaining कि जो पूरी whiskey बनती है तालिस्कर में वो कैसे बनती है, what is the process, मतलब from the scratch. जैसे कि barley चाहिए उसके लिए, water चाहिए, तो water ये तालिस्कर का ही है, इस village का. barley कहाँ से आता है, फिर वो melting कैसे होती है, and उसको peat कैसे करते हैं. So entire process he is explaining. तो ये वाला room is only the first process. उसके बाद next हम और भी 3-4 जो process है वहाँ जाएंगे. दिस इज़ द मिलिंग प्रोसेस. यहाँ पे वो जो बार्ली है उसको वो लोग क्रश करते हैं, समझ लो मिल जैसे अपने वहाँ होते हैं वैसे. दिस इज़ द थर्ड प्रोसेस आफ्टर मिलिंग. जब बार्ली उन्होंने मिल कर लिया है उसके बाद दे पुट इट हियर विद वाटर एंड उसको वो बॉईल करते हैं. एंड देन यहाँ से ये पास होता है ऊपर के कैंस में जहाँ पे फर्मेंट होती है, बेसिकली वो बियर बनती है. एंड देन आफ्टर दैट बियर से वो अल्कोहल बनाते हैं. So the wort, the sugary liquid, that also gets piped away. That's going to get sent upstairs to our tun room where we start the fermentation process, and that's where we're going next. Upper tun room, because these are actually, the bottom of these are downstairs, about 25 foot. They're made from Douglas fir. If you look at these windows, you can see that they're all at different stages of the process. And what we're doing is, this is the fermentation process, where we're taking our wort, or sugary liquid. We've added yeast. We're heating it at 16 degrees centigrade, and the yeast is turning the sugar into ethanol and carbon dioxide. The carbon dioxide is piped away, and what we have by the end of this process is our wash, which is, remember the cloudy beer, the 8-9%. जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना, यहाँ पे फर्मेंटेशन होती है. तो दिस इज बेसिकली द फर्मेंटेशन रूम. फर्मेंटेशन प्रोसेस हैपेंस हियर. एंड यहाँ पे पहले बियर बनती है बहुत दिनों तक, एंड दे मिक्स समथिंग, फिर शुगर आउट करते हैं उससे, एंड देन फिर बियर से ये कहीं जब बियर रेडी हो जाती है, फिर आफ्टर सम टाइम दे पुट इट समवेयर एल्स फॉर मेकिंग द अल्कोहल विस्की. I need to ask that before you pass the yellow line, you put all your phones away, okay? It's not because we're hiding anything, it's just you can get a build-up of alcohol in here, like ethanol, so it can be explosive. Because of explosion risk, we are not allowed to use our phones. एक येलो लाइन के बाद. तो ये जो आपको कैंस दिख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप की विस्की बनती है, अलग अलग टाइप के तालिस्कर की जो वेराइटीज़ है वो आते हैं.
बेसिकली यहाँ पे वो प्रोसेस होता है फॉर तलिस्कर. हाँ, दिस इज वन ऑफ द स्प्रिंग्स विच दे यूज फॉर मेकिंग तलिस्कर विस्की. Yes. Oh, it's very low. And compared to other countries, yeah, they're trying to stop us. They're trying to stop us. That kind of fiery amber colour to it. The second thing you do is you put it on the table and you spin it around like this. And now when you pick it up, you're going to see there's a little line in the middle of the glass, and you can see the little trickles. Can you see those trickles coming down? Those trickles are called the legs or the tears of the whiskey. What they are doing is you're letting you know how viscous it is. If this was a smokiness, you get the smokiness. Peaty smokiness. Remember the barley? Is anyone getting anything else? Whiskey tour is done, and this is their whiskey shop जहाँ से आप खरीद सकते हो. T-shirts है, whiskey है, and there are a lot of other bunch of stuffs. What the hell is this? 850. Oh my god, 30 years. 85,000 का ये 30 years. And ये तो 35,000 43 years कास्ट में रह के ये हुई है. This is 35 3 lakh 50,000. That's all the leg. Can you please give your smell? No, you Your have a honest taste. reaction of the My honest reaction is this glass is not going to my lips. तो मैं honest reaction दूंगा, अभी पिया नहीं लग Your honest reaction. अभी तक गया नहीं है विस्की, और ये गया. Our whiskey tour, guys. I hope आपको भी देख के मज़ा आया हो. If you are a whiskey fan, single malt या Scotch fan, do come and do one of the distilleries. क्योंकि यहाँ Scottish Highlands is all about distilleries. यहाँ हर एक छोटे गांव एक दारू के नाम से है, विस्की के नाम से, स्कॉच के नाम से है वहाँ, क्योंकि वो वहीं पे बनती है. तो आप कोई भी डिस्टिलरी का टूर लो अगर आप फ़ैन हो तो. एंड आई डोंट नो, हम यहाँ से सो तलिस्कर की जो शॉप है, हियर इट इज़ एक्सपेंसिव. दे आर ओनली गिविंग 10% डिस्काउंट. ऑल्सो जो प्राइजेज़ है, जो हमको बाहर ऑनलाइन प्राइजेज़ दिख रहे हैं जैसे कि 39, वो यहाँ के 50-52 बेच रहे हैं, विच इज़ लाइक प्राइजेज़ आर लाइक 15-20 पाउंड ज़्यादा है. स्काई, द आइल ऑफ स्काई की जो फेमस तालिस्कर विस्की है, उसका ये टूर था. आई होप आपको भी देख के मज़ा आया. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर इफ़ यू आर कमिंग to my channel for the first time, because that will mean a lot to me. Thank you so much for all the love and watching my videos. Don't forget to subscribe if you are coming for the first time, because you don't want to miss out on other videos जो आने वाले हैं, amazing videos. And like, comment. Bye, love you.